خلافتنا بمسرور فتية عظيم شأنها بين البرية. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and welcome to another episode of Beacon of Guidance. This is a series of a compilation of questions and their answers given by Hazrat Mirza Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz during various virtual mulaqats from Ahmadis from across the world. Let's now turn to the first question of the program, where Hazrat Khalifatul-Masih V Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz blessed a virtual mulaqat with Lajna Imaila members from Italy on the 4th of September 2022. A member asked, what is Hazur's guidance regarding Ahmadis by birth who lack religious education? Let's take a look at Hazur's answer. खुशकिस्मती से कुछ लोग जो पैदाइशी अहमदी हैं मगर उसके बावजूद वो दीनी तालीम की कमी का शिकार हैं और ये कमी उनकी औलादों में मुंतकिल हो रही है। तरबीती कोशिश के बावजूद मुस्बत नताइज सामने नहीं आ रहे। प्यारे हुजूर, ऐसे अहमदी अहबाब के लिए आप क्या नसीहत फरमाएंगे कि वो अपनी नस्लों को बचाएं और दीन इस्लाम के मुस्तकबिल के मेमारों की हिफाजत करें? अभी मैंने सेक्रेटरी तरबियत को बातें जो कही हैं उस पर अमल करें। ऐसी औरतें हैं जिनकी दीनी तरबियत कमज़ोर है, उनकी ख़ुद तरबियत करें और उनकी लड़कियां और बच्चे जो हैं उनको ज़ैली तंजीमें संभालें। बच्चों को खुदा अहमदिया संभाले, लड़कों को लड़कियों को लजना संभाले, तरबियत करे, उनकी अपने घरों में तरबियत करें। तो ये तो एक मुस्तकिल काम है करने वाला। इसकी अहमियत बताएं तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अगली नस्लें कम से कम ठीक हो जाएंगी। ये अगर नहीं भी तो अगली नस्लें ठीक होंगी। लेकिन दुनियादारी में पड़ गए तो उनसे कह दें फिर दुनियादारी में पड़े तो फिर दुनियादारी में तो फिर तबाही के अलावा कुछ भी नहीं होना, आखिर में फिर रोगे। ठीक है, प्यार से मोहब्बत से ज़ाती ताल्लुक़ पैदा करके ज़ाती राब्ते करके ऐसे लोगों को समझाना चाहिए। पहले ही मैं कह चुका हूँ, ज़ाती राब्ते करने की कोशिश करें। थोड़ी सी तादाद है लजना की आपकी, तो उनके हिसाब से अगर ज़ाती राब्ते कायम करें तो बड़े आराम से हो सकते हैं। ऐसा मसला ही कोई नहीं। छोटी सी जमात में तो बहुत काम हो सकते हैं। बड़ी जमातें हों जिनकी हज़ारों की तादाद हो, वहाँ तो मसलाइल पैदा हो सकते हैं। आप तो छोटी सी जमात हैं, आपके यहाँ तो तरबियत के जो भी मसाइल उठते हैं उनका फौरी हल होना चाहिए। अगर आपस में आप में एका है, आप में मोहब्बत और प्यार है, जो आमला मेंबरात हैं या दूसरी पढ़ी लिखी समझदार हैं, उनमें पैदा करें तो बाकियों में भी पैदा होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ये बात, ये तो सारे काम जमाती काम जो है हमारे पास फोर्स तो कोई नहीं, फ़ौज तो कोई नहीं, सख्ती से नहीं हो सकते। प्यार और मोहब्बत से होने, यही अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु को भी फरमाया था। कुरान करीम में यही हुक्म है कि प्यार और मोहब्बत से काम लो और इनको करीब लाओ, तो ये तुम्हारे करीब आ जाएंगे। सख्ती करोगे तो दूर भाग जाएंगे। For our second question, beloved Hazur had graced a virtual mulaqat with Majlis Khudam al-Ahmadiyya Australia on the 26th of June 2022. A Khadim had asked, how can we bridge the cultural gap between Khudam brought up in Australia and those who had migrated? Let's see the reply that Hazur gave. Beloved Hazur, most of the Khuddam in Australia have either grown up here or have migrated from overseas, predominantly from the subcontinent. Sometimes we observe that there is a cultural gap and different ways of working between the two. What should Majlis Khuddam al-Ahmadiyya do to bridge this gap and work coherently? You see, those who are grown up here, they have different mindset. Their environment was different where they were brought up. But there are quite a number of Khuddam in recent years who have migrated from Pakistan or some other countries. There are some migrants from Fiji also. So they have almost the same culture as those who were brought up here in Australia. Only difference is between Pakistani and other non-Pakistanis who were brought up here in Australia or in any of the Western country. This is why I have always been saying that your parents should at least try to train their children from the very childhood. Tell them who are they, what is the importance of religion, why they are Ahmadiyya Muslims, and why should they offer 5 daily prayers, why should we read Quran and find out the commandments given in the Holy Quran, why should we practice those commandments and injunctions.
In this way, the children would know that what are our duties, who we are. Then if they are brought up even in this culture, in this society, then they will be able to differentiate between good and bad. They would know that these are the bad morals which the Western culture allows, but Islam prohibits. There are certain things. See, for instance, Islam says to the men that you should always lower your gaze. You should not openly see the women. You should not try to enjoy something which is bad morally. And at the same time, Islam says to the girls that they should also lower their gaze and cover their faces so that their beauty cannot be freely seen by their opposite sex. But nowadays, there are some different preferences. So that is all immoral in Islam. So we shall have to teach them from the very childhood. This is the duty of the parents. And this is the duty of Khudamul-Ahmadiyya or Atharul-Ahmadiyya, that tell them that these are the good things, these are the bad things, these are the things which Allah Ta'ala does not like. These are the things which have been taught to us that we should refrain from. So it needs some hard work. Not only Khudamul-Ahmadiyya, but the parents should also be involved in it. And they should be educated by Ansarullah, Khudamul-Ahmadiyya and Lajna, that how can they train their children in their homes. It's quite a difficult task, but you will have to face this challenge. You will have to work hard. And if parents are also helping in training their children at home, and Atharul-Ahmadiyya organization is also working hard to tell the children whatever they learn in their schools, what is good and what is bad, because in the schools they are given different training. Nowadays, in the name of freedom of expression and freedom of their own liking and disliking, some immoral things are coming into the minds of the children. And they don't bother. And they don't care even, and they cannot differentiate between good and bad. So we shall have to tell them what is good and what is bad, and what shall be the bad effect of these things in future, in your life. And if you believe in Allah Ta'ala, that how Allah Ta'ala will treat you if you are not following. So from the very childhood, we have to infuse this into the minds of the children, that we shall have to follow the teaching of Islam, and we shall have to learn the morals which have been taught by Allah Ta'ala and Islamic teaching. For our third question, we turn to Europe, where Hazrat Khalifatul-Masih V granted a virtual mulaqat with Majlis Khuddam al-Ahmadiyya Germany on the 21st of August 2021. Hazur was asked the solution to many issues that have risen in homes during the pandemic period. मेरा सवाल है कि आजकल जो कोरोना की वबा चल रही है उसमें घरों में भी बहुत मसले हुए हैं और उसका क्या हल हो सकता है? क्या हो रहा है घरों में, क्या हो रहा है कि मसले कि एक दूसरे की लड़ाइयाँ. बात यह है इस कोरोना की वबा में तो फिर अल्लाह ताला की तरफ झुकना चाहिए ना. अगर ये वबा है और अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा है तो तब भी आपस में मोहब्बत प्यार कायम होना चाहिए और अल्लाह ताला से माफ़ी और तौबा मांगनी चाहिए. आपस में सुलह सफ़ाई की फ़ज़ा पैदा करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस इब्तिला को हमारे से दूर कर दे, वबा को दूर कर दे. और अगर ये कोई इम्तिहान है तो तब भी अल्लाह से दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला हमें इस इम्तिहान में कामयाब कर दे और आप उसमें आपस में मोहब्बत और प्यार पैदा हो. अल्लाह ताला कहता है कि एक दूसरे का ख्याल रखो. हज़रत मसीह मौऊद ने फरमाया कि अल्लाह ताला जो है हुकूकुल इबाद की तरफ बहुत तवज्जो दिलाता है. अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा अपना हक़ जो है वो माफ़ कर देता है, छोड़ देता है, लेकिन बंदों का हक़ अगर तुम अदा नहीं करते तो वो माफ़ नहीं करता. अगर खामन बीवी का हक़ अदा नहीं कर रहा और लड़ाइयाँ लुड़ियाँ बिला वजह कर रहा है, अभी मैंने इतना लंबा खुतबा दिया है, तकरीर की है लजना जलसे पे, तो वो गुनाहगार है. अगर बीवी खामन का हक़ अदा नहीं कर रहे, बिला वजह लड़ाइयाँ करने की कोशिश कर रही है तो वो भी हक़ अदा नहीं कर रही.
अगर बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं तो वो भी हक अदा नहीं कर रहे, अगर बाप बेटियों को बच्चों के साथ सही सलूक नहीं कर रहा तो वो भी हक अदा नहीं कर रहा, अगर माँ चिड़चिड़ी हो गई है और बच्चों को तंग कर रही है तो वो भी नहीं। कि सबको ऐसी हालात में तो सबको एक ऐसी ताकत बन जाना चाहिए जो इकट्ठी हो, ठीक है। तो फिर ही अल्लाह ताला के फजल भी जज्ब होते हैं। तो इसमें तो ठीक है, हालात की वजह से बाहर नहीं निकल सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन इतने भी हालात कोई नहीं है। तुम लोग कौन सी पाबंदी करते हो सारे घर वाले। कोरोना की वजह से काम में ज़रा सी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गया, लेकिन बाज़ारों में भी निकल जाते हो, सड़कों में भी फिर रहे होते हो, पार्कों में भी चले जाते हो, हैं। जहाँ बाप का दिल चाहता है वो भी अपने दोस्तों में गप्पे मारने चला जाता है, जहाँ माँ का दिल चाहता है वो भी अपने सहेलियों में चली जाती है गप्पे मारने, जब तुम लोगों का दिल चाहता है तुम लोग भी निकल जाते हो। तो इतनी तो पाबंदी कोई नहीं है कि कर रहे तुम लोग 100% पाबंदी कर रहे होते हैं तो ये वहाँ पहले ख़त्म हो जाती। हाँ, बाज़ रिस्ट्रिक्शन की वजह से बाज़ दफ़ा नफसियाती असर हो जाते हैं, लेकिन उसका तरीका यही है कि अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला इस रिस्ट्रिक्शन को दूर करे और इस बीमारी को दूर करे और रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाएं और अल्लाह ताला हम सब पे फजल फरमाए। तो ये तो दुआओं की तरफ तवज्जो की ज़रूरत है, ठीक है। और ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हमने एक दूसरे के हक़ किस तरह अदा करने हैं, ठीक। वो करोगे तो सब घर में सुकून और माहौल होगा। ये तो आम हालात में भी नहीं, कोरोना तो बहाना बन गया। पहले बाप जो था वो घर से बाहर रहता था सारा दिन, तो वो पता नहीं लगता था कि उसका मिजाज कैसा है। अब वो क्यों घर में रहता है, इसलिए उसकी सख्तियाँ बच्चों को भी झेलनी पड़ती हैं, बीवी को भी। इसलिए तुम कहते हो अब्बा ने ऐसा कर दिया, अब्बा ने ऐसा कर दिया, या अम्मा चिड़चिड़ी हो गई हैं। पहले तुम लोग भी बाहर घूमते रहते थे, अब तुम लोग भी ज़रा कम बाहर घूमते हो, लेकिन घूमते हो ये मुझे पता है ना। चलो बस दुआ किया करो कि अल्लाह ताला इसको चल दे। We now turn to question 4, where Hazrat Khalifatul-Masih V, Ayyadahullah Ta'ala binasrihil Aziz, blessed a virtual mulaqat with Waqf-e-Nor members from Canada on the 16th of October 2021. One of the members had asked, how should one approach an Ahmadi who is involved in sins? What is the best way of approaching an Ahmadi friend who is becoming overly involved in various sins and moving away from the Jamaat and into situations that are harmful for him? The thing is, you will have to find out the cause of it first. If he is your close friend, then you should know that what are his preferences now. Who are those people with whom he is sitting, his company? Is he trying to avoid you and sitting with other friends who are not good, who are involved in committing so many sins? Then, if that be the case, you will have to ask him that the way you are going toward is not the right way, right? It will spoil your life, and ultimately you are going to ruin yourself, or rather you are going to doom yourself, right? Try to be sympathetic to him. Once he realizes that you are his real friend and his sympathizer, then he will try to listen to you. Okay? There are some other causes. Sometime when some boys, youngsters have some problem in their houses, their father and mother don't have good relations, that is also causing them to deviate from, because one side their father and mother say that religion is the thing which teaches us to do good things, whereas when he sees the action of his father and mother, they are not even practicing those things, and their character is, disturbing him. Sometime some office bearers become cause of the trouble, right? So there are so many things. So you have to find out what is the cause, and you treat them according to that, right? But the main thing is that they must realize, they must understand that you are his sympathizer.
and best friend. Then they will listen to you. Okay? Jazakallah. Assalamu alaikum. For the fifth question of this segment, Hazrat Khalifatul-Masih V, Ayyadahullah Ta'ala binasrihil Aziz, blessed a virtual mulaqat with Khuddam from Denmark on the 14th of August 2021. One Khadim asked, what rights do men have over their wives? آپ آج کل عورتوں کے حقوق کے بارے میں بھی خطاب فرماتے ہیں. آپ نے بتایا ہے کہ وہ اپنے خاوندوں سے کن باتوں کا مطالبہ کر سکتی ہیں. اس طرح آپ نے بتایا ہے کہ قوام ہونے کے ناطے خاوند کے کیا فرائض ہیں. حضور، میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کے کیا فرائض ہیں خاوند اور اس کی فیملی کے آگے؟ مرد کے اپنی بیوی پر کیا حقوق ہیں؟ بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آج کل آپ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. میں آج کل عورتوں کے حقوق کی تو بات کر رہی ہوں. آج کل تو میں خطبات دے رہا ہوں تاریخ اسلام پہ، خلفاء بدری صاحبہ پہ. ہاں، اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریسنٹ تقریر میں جج سلانہ کی آپ نے عورتوں کے حقوق کی بات کی. ٹھیک ہے، تو اگر اسی تقریر کو آپ غور سے سنیں، اس کو بات کو چھوڑیں کہ میں پہلے کیا کچھ کہہ چکا ہوں عورتوں کو کس طرح کہ ان کو اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے ہیں. اسی تقریر میں اگر آپ اس کو غور سے سنیں، میں حیران ہوں کہ لوگوں نے غور سے سنا ہی نہیں، اور عورتوں نے بھی، کیونکہ بعض پوائنٹس ذرا زیادہ ہائی لائٹ ہو کے ان کی فیور میں چلے گئے تھے، اس لیے انہی کو دیکھا. اسی تقریر میں نے بتایا ہوا ہے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں. اس میں اس کی اور وہ جو حدیث بیان کی، ایک لمبی حدیث تھی جس کا خلاصہ میں نے بیان کیا تھا کہ عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اس نے کہا کہ مرد جو ہیں وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، چندہ بھی دیتے ہیں، کمائی بھی کرتے ہیں، اور پھر جہاد پہ بھی جاتے ہیں، حج پہ بھی جاتے ہیں، تو اور عورتیں بعض دفعہ ایسے یہ کام نہیں کر سکتیں. تو جب گھر میں بیٹھ کے جو فرائض ادا کر رہی ہیں، تو کیا ہمیں اس کا اجر اتنا ملے گا جتنا ان لوگوں کو جہاد وغیرہ کے برابر مل رہا ہے؟ تو آن صلی اللہ نے فرمایا کہ ہاں، تم لوگوں کو ملے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں عورتوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ مردوں کے حقوق نہیں ہیں. ان کو ثواب جو مل رہا ہے مردوں کو، وہ عورتوں کے ثواب کے برابر ہے. ٹھیک ہے، برابر کر دیا نا ثواب میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کئی جگہ یہی لکھا ہے کہ مرد کو بھی اس کے نیک کاموں کا اجر ملے گا، عورت کو بھی نیک کام کا اجر ملے گا. مرد کو بھی یہ چیز ملے گی، عورت کو بھی یہ چیز ملے گی. جنت میں مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی. گھر کو سنبھالنا، اس عورت نے جو یہ کہا تھا کہ ہم گھر کو سنبھالتی ہیں، اس کا مطلب گھر کو سنبھالنے کا حق ادا کریں گی تو اجر ملے گا نا. یہ حدیث میں اس بات کی کو اگر غور سے دیکھیں کہ عورت نے کہا تھا ہم گھر کو سنبھالتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ذمہ داریاں ادا کرنے والی عورت ہے گھر کی. وہ بچوں کی حفاظت کرنے والی ہے، بچوں کی تربیت کرنے والی ہے، مرد کے بچوں کی. مرد کے گھر کی نگران ہے، اس کے جو گھر میں جو دولت اس کی پڑی ہے اس کی حفاظت کرنے والی ہے، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والی ہے. وہ مرد سے وفاداری کرنے والی ہے، مرد سے وفاداری کرنے والی ہے اور اس کے حق ادا کرنے والی ہے. تبھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر یہ تم لوگ ساری باتیں کر رہی ہو تو تمہیں جو مردوں کے جہاد اور باتوں اور حج اور فلاں فلاں کے ثواب میں اتنا اجر تمہیں بھی مل جائے گا. تو اسی حدیث میں عورتوں کو یہ کہہ دیا کہ تم یہ کام کرو گی تو ملے گا. یہ کب کہہ دیا کہ گھر بیٹھے مل جائے گا سب کچھ؟ اس کی لسٹ بنوائی. اس عورت نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ کرتی ہیں، کیا ہمیں اس کا اجر ملے گا؟ ہاں، اگر تم واقعی یہ کرتی ہو، اگر تم بچوں کی صحیح تربیت کر رہی ہو، تم خاوند کے گھر کی حفاظت کر رہی ہو، اس کے پیچھے اس کے اپنی عزت کا خیال رکھ رہی ہو، اور اس کے پیسے کی حفاظت کر رہی ہو، اس کی دولت کی حفاظت کر رہی ہو، اور ہر طرح سے اس کی خدمت کر رہی ہو، تو تمہیں یقیناً ثواب ملے گا اتنا ہی جتنا مردوں کو جہاد کا ثواب ملتا ہے. ذمہ داری تو ڈال دی. آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں نے صرف عورتوں کے حق کی بات کی؟ عورت پہ تو اتنی باتیں اسی حدیث میں بیان ہو گئی ہیں جو اس نے کرنی ہے گھر کو سنبھالنے کے لیے. اب آپ کے بچے کی تربیت اگر صحیح ہو جائے تو کیا عورت اس بات کی حقدار نہیں ہے کہ آپ اس کو سے نیک سلوک کریں؟ اگر عورت آپ کے گھر کی حفاظت کر رہی ہے
क्या औरत इस बात की हकदार नहीं है कि आप उससे नेक सलूक करें? अगर औरत अपनी इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत कर रही है, अपने खामद से सिंसियर और वफ़ादार है और उसका प्यार का हक अदा करने वाली बीवी है, तो क्या वो इस बात की हकदार नहीं है कि आप उससे नेक सलूक करें? है ना? बस फिर कहाँ से हक आ गए? हक तो दोनों के बयान हो गए। इसी गौर से सुने तो इसी हदीस में दोनों के हक अदा हो जाते हैं। ठीक है सर। तो ये सारे हक दोनों को दिए हुए हैं कि तुम ये करो तो उसको अजर फलां चीज़ का है और औरत को अजर ये चीज़ का है। हाँ, मर्द को ये कहा है तुम उससे नेक सलूक करो, आशिरुहुन्ना बिल मअरूफ। तो जो नेक सलूक है वो इसलिए है कि जब तुम्हारे वो हक अदा कर रही है औरत, तो उससे नेक सलूक करो। जी बिल्कुल सर। ठीक है ना? For the sixth question of this segment, Hazrat Khalifatul-Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz, blessed a virtual mulaqat with Majlis Atfalul Ahmadiyya UK on the 24th of April 2021. One of the members had asked Hazur to suggest which books of the Promised Messiah should the young generation read. Let's take a look at Hazur's response. Hazur, my question is, by the grace of Allah, we have so many books of the Promised Messiah alayhi salam, but they can be quite difficult to understand. Hazur, what would you recommend is a good book for young people to read first? You are quite right that there are quite a number of Hazrat Mirza Masroor Ahmad's books, and most of them, they are very much difficult to understand. But there are some books which are easy to understand, right? Such as Ark of Noah, and even Hazrat Masih has said that my book, Hakikatul-Wahi, is in very easy language and you can understand it, and it has been translated also, I think. So you can read these books. But just to develop and create interest in the books of Hazrat Masih, you should first start reading from the passages of those books which are of your interest. And you can see the content list. And for that, even the Jamaat has also made this easy for you by printing and some selected excerpts and passages of the book from the books of the Hazrat Masih in the form of Essence of Islam, right? So they are in 5 volumes, and that covers different topics. So you can just take the book and see the topic of your interest and then read it. By doing this, you will develop and create interest in reading the books of Hazrat Masih, and at the same time you will increase your knowledge also, what Hazrat Masih has said or he wanted us to understand with regards to our religion, with regards to our spiritual enhancement, spiritual level, and with regards to our knowledge and wisdom, right? For the next question of this segment, Hazrat Khalifatul-Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz, blessed a virtual mulaqat with members of Atfalul Ahmadiyya, the Gambia, on Sunday the 30th of May 2021. A child had asked Hazur, as children, how do we celebrate our birthdays? Assalamu alaikum, my dear and beloved Huzur. My question is, as children, can we celebrate our birthdays? You see, as Ahmadi children, yes, you can celebrate in your birthday in your houses. No need to spend money on inviting people on your birthday. So you can sit together with your family members and prepare some sweet and enjoy it. Some cake, some pastry, and then make a feast even and enjoy it, whichever you like. But to invite so many people and celebrate it in a way which is a lavish way, it is not permissible. We never celebrate the birthday of the Holy Prophet ﷺ. So even if we don't celebrate the birthday of the Holy Prophet ﷺ, what is the need to celebrate our own birthday? But just to enjoy it, to remember that today is your birthday,
So you can just sit together with your family members, and even your mother can prepare some good food for you, even cake or pastry or something like that, or some other sweet, or whichever food you like, any feast you can enjoy at home. But not to invite your fellow students like this. No, there's just wastage of time and money, right? Instead, if you have enough money, you can give some amount to the charity, so that the poor people can also enjoy some food from your money. There are quite a number of poor people in the world who are even deprived of their daily food. They are hunger stricken. They are suffering. So instead of spending money on something which is just useless, you should better help the poor people so that they can at least eat food and enjoy their life. But also, you should celebrate your birthday by offering 2 rakats, 2 nafal. Pray to Allah Ta'ala that Allah Ta'ala has blessed you with this life and blessed you with so many things. So you thank Allah Ta'ala for this, and also seek His help, and pray to Allah Ta'ala that He always give you strength, more strength in the future, so that you can be a useful asset for your Jamaat and for the nation. Right? Okay? And for the final question for today, Hazrat Khalifatul-Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz, blessed a virtual mulaqat with Ahmadiyya Muslim women from Kababir on the 6th of June 2021. One of the members asked if it is permissible to accept an invitation on behalf of their non-Muslim friends to celebrations and events. Let's take a look at Hazur's response. बात यह है कि सिर्फ माहौल वहाँ कबाबीर में तो ऐसा नहीं है, या इसराइल में तो ऐसा नहीं है, दुनिया के अक्सर ममालिक में यही माहौल है, ठीक है। बल्कि मुसलमान मुल्कों में भी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो बड़े सगीर है, उसमें तो हिंदुओं की और गैरों की रस्में जो हैं इतनी राह पा गई हैं कि मुसलमानों के अंदर भी वो रस्में आ चुकी हैं गलत किस्म की। और लेकिन जो अच्छे ताल्लुकात वाले हैं गैर जमात, वो अहमदियों को बुलाते हैं, तो आप जाएं, अगर वहाँ जाके उनकी तकरीबात में जाके अपना एक वक़ार रख के बैठें। अगर वहाँ डांस हो रहा है तो ठीक है, उस तरफ से नज़र फेर लें। अगर वहाँ कोई गलत प्रोग्राम हो रहा है तो उठ के दूसरे कोने में चले जाएं। लेकिन अमूमी तौर पे ये इस तरह नहीं होता। इंतहाई कोई बेहूदगी वाला माहौल हो तो और बात है, फिर वहाँ जाएं और उसको जिस तकरीब में भी बुलाया गया है उस तकरीब में, अगर वो शादी की तकरीब में है तो उसको वहाँ बुलाने वाले को या दूल्हा दुल्हन को तोहफ़ा जो भी देना है अपने दे के वह आ जाएं, या खाना वगैरह खाया है तो उसके बाद उठ के आ जाएं। अपने आप को बचाया जा सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। इतना सिवाय इसके कि बिल्कुल ही बेहयाई वाला माहौल हो, और जो बेहयाई वाला माहौल है वहाँ पहले ही पता लग जाता है, उसमें शामिल ना हो फिर आप। लेकिन अमूमी तौर पे ऐसा माहौल होता है कि जहाँ किसी न किसी तरह हालात के मुताबिक एडजस्ट किया जा सकता है। ये वहाँ एक दूसरे के तकरीबात में जाना चाहिए, उससे ताल्लुकात भी बेहतर होते हैं और आपस में तारुफ भी बढ़ता है, आपस में ताल्लुक़ पैदा होता है, और जिसकी वजह से फिर आपको तबलीग के रास्ते भी खुलेंगे। बिल्कुल ही अपने आप को अलहदा कर लेंगी तो उससे फिर जो तबलीग के रास्ते भी मसदूद होते चले जाएंगे। इसलिए माहौल देख के वहाँ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। अगर सिवाय इसके कि बहुत ही गंदा माहौल हो जाए तो मादरत करके वहाँ से उठ के आ जाएं, लेकिन अमूमी तौर पर इतने गंदे माहौल भी नहीं होते। कुछ रस्म व रिवाज ही होते हैं, उनको अवॉइड करके एक तरफ मुंह करके आप लोग बैठ सकते हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। तो और अगर लड़कियां डांस कर रही हैं तो फिर अगर आपने देख भी लिया उनकी तरफ तो कोई हर्ज नहीं है। मर्द औरतें अगर इकट्ठे कर रहे हैं तो वहाँ बात बेहूदगी हो जाती है, गलत हरकत हो जाती हैं, उससे नज़र बचा लेनी चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ औरतें ही औरतें हैं उस माहौल में,
اور وہ ڈانس کر رہی ہیں تو آپ نے دیکھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے, اتنا بھی ریجیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ان کو اپنی لڑکیوں سے اس دوران میں آپ اپنی سہیلیوں سے باتیں بھی کر سکتی ہیں. آپ نے شامل تو نہیں نہ ہونا, آپ کو زبردستی کوئی نہیں کہے گا اٹھو شامل ہو جاؤ. اگر کہے تو پھر کہہ دیں میں نے شامل نہیں ہونا, میرا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. اچھا ہے, بلکہ اس حوالے سے آپ کی دین کی تبلیغ کا بھی راستہ کھل جائے گا. اگر آپ کو کوئی کہے آؤ سارے رقص کر رہے ہیں تم بھی رقص میں شامل ہو جاؤ, تو کہہ دو نہیں میں نہیں کر سکتی, میرا دین مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا. پھر دین پہ باتیں شروع ہو جائیں گی. کوئی نہ کوئی اس میں شریف آدمی ہوگا جو آپ کی بات سننے کی طرف توجہ کرے گا, اور اس طرح پھر اور مزید راستے کھولیں گے تبلیغ کے. ٹھیک ہے, لیکن اپنے آپ کو معاشرے سے علیحدہ بالکل نہیں کرنا. ہاں, جو بالکل ہی لغویات والا معاشرہ ہے وہاں سے بچنا چاہیے, وہاں سے اٹھ کے آ جائیں. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کا ایمان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی مضبوطی اور قوت ارادی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا ہی زیادہ قوت ارادی ہے کہ اس معاشرے میں کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں. And that concludes another episode of Beacon of Guidance. Do join us again for more questions and answers with our beloved Hazur, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz. Until the next episode, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.